लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा बॉडी में सिचुएटेड अनवांटेड फैट को हम लोग निकालते हैं। जो चर्बी है, नॉर्मली सभी लोगों में चर्बी होती है, कई बार ये चर्बी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी का शेप प्रॉपर नहीं हो पाता है। इस प्रोसेस में हम लोग जो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर रहती है उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग स्किन में कुछ होल्स करते हैं, जनरली जरूरत के हिसाब से 1 2 3 होल्स रहते हैं। बिल्कुल छोटा सा होल रहता है जिसका कोई निशान नहीं दिखता है लंबे समय में। उस होल के थ्रू कुछ सॉल्यूशन अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अंदर सॉल्यूशन भी आप डालते हैं जिससे जो फैट रहता है वो पिघल जाता है। देन उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। जरूरत के हिसाब से हम लोग एब्डोमेन में, थाइज में, आर्म्स में, हिप्स में, चिन्स में, इन एरियाज में लाइपोसक्शन करते हैं। मोस्ट कॉमनली टमी एरिया में किया जाता है। प्रोसेस में फैट कितना निकलेगा वो डिपेंड करता है कितना फैट मौजूद है स्किन के नीचे। नॉर्मली 5 लीटर से लेके 10-12 लीटर तक फैट हम लोग निकाल पाते हैं पेट में से। जो प्रोसेस रहता है अराउंड 2 से 3 घंटे का रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। आप 1 या 2 दिन के बाद अपना रूटीन लाइफ जैसा चल रहा है वैसा चला सकते हैं। कोई परहेज नहीं रहता है, कोई आफ्टर केयर मेनली नहीं रहती है। आपको 4 से 5 दिन तक मेडिसिन लेना रहती है। मेनली इस प्रोसेस के बाद एक चीज जो करना पड़ती है, आपको कुछ कंप्रेशन गारमेंट टाइप का पहनना पड़ता है जो कि अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर पहन सकते हैं उसको। बेसिकली प्रोसेस में हम लोगों ने स्किन और मसल्स के बीच का जो चर्बी निकाला है तो वहाँ खाली जगह डेवलप ना हो जाए या उस जगह में कुछ कलेक्शन ना हो, उसको खत्म करने के लिए ऊपर से कंप्रेशन देने के लिए प्रेशर गारमेंट पहनने का बोलते हैं, जिससे जो स्किन है वो अंडरलाइन मसल से चिपक जाती है। नॉर्मली हम लोग एब्डोमेन और थाई एक साथ कर लेते हैं या एब्डोमेन या आर्म्स एक साथ कर लेते हैं। 2 एरिया या कई बार 3 एरिया एक साथ कर देते हैं। So, watch and learn how liposuction is performed on the outer thighs. Most body fat is located on top of muscle tissue, just beneath the skin. Blood vessels supply the area with blood, and nerve endings provide sensation to the skin. The amount of fat that accumulates under the skin varies depending on inherited traits, body type, and lifestyle factors such as exercise and diet. Liposuction works by surgically removing excess fat with a suction device, resulting in improved contours in the desired area. There is a variety of liposuction techniques available today, including the use of ultrasonic waves or laser light to aid fat removal. However, most liposuction techniques are variations of the widely used procedure demonstrated in this animation. This procedure, known as tumescent liposuction, uses a special fluid to aid fat removal with suction. Your physician will carefully mark the areas that will be sculpted and use these markings as guidelines during the procedure. Liposuction may be done under local anesthesia where only the surrounding area is numb. Or you may be asleep under general anesthesia for procedures involving large areas or multiple areas of the body. Tumescent fluid expands the tissues, making it easier to remove fat cells, numbs the treatment area, and minimizes bleeding. Once a large volume of tumescent fluid is injected into the treatment area, you will rest for several minutes while the area becomes completely numb. Short incisions are made in inconspicuous areas or along natural creases of your body, depending on the location of the procedure. Your physician will insert a small tube-like device called a cannula. Using a forward and backward motion, small tunnels are created in the fat layer, removing the fat with suction. The tunnels will collapse over the next few weeks, resulting in new contours in the specific treatment areas. The incisions may be closed with sutures or may be left open, and absorbent pads are applied to the site. Bruising and swelling after the procedure are normal and will typically subside within several weeks. You will likely need to wear a special compression garment for a few weeks to provide support, minimize swelling, and help the skin conform to the new contours of the body. While you will generally notice an improvement in your appearance very soon after the procedure, your new contours will progressively improve for 3 to 6 months. Although fat cells are permanently removed during the procedure, it is important to realize that liposuction does not prevent growth of remaining fatty tissue. With realistic expectations and proper maintenance,
You can be satisfied with the results of your liposuction procedure